Hi friends, my name is Krishna Huda. I am on Wishberry to raise funds for our film School. School basically deals with the importance of education in the rural part of our country. It is about an IIT graduate who renounces a lucrative career to teach children of a village in Haryana. But he faces a stiff opposition from the villagers and the sarpanch of the village because they believe it is more important for children to work in fields than to go to school. The story unfolds where the teacher tries to teach them the importance of education and at the same time tries to save the school. शाबाश। किताब से क्या होता है? पढ़ाई। और पढ़ाई करके आप लोगों को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जी मास्टर जी। जी बस मैं इतना ही कहने आया था कि आप रौनक से कुछ दिन और काम मत करवाइए। किसान का बेटा है, काम ना सीखेगा तो तकलीफ होगी। जी अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो ज़्यादा तकलीफ होगी। किसान से अच्छा है पढ़ा लिखा किसान। मैं हमेशा पढ़ाई लिखाई के खिलाफ रहा हूँ और मैं खुद भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत नहीं होती, समझा? स्कूल गया था, काम तेरा बाप करेगा। घास कौन काट के लाऊगा? हाँ, घास कौन काट के लाऊगा? हमारे स्कूल को बचा लो भगवान। तुम तो जानते हो कि इस गांव में स्कूल होना कितना जरूरी है। तुम तो राम हो और तुम्हारे नाम से अच्छा कुछ नहीं होता। तुम आईआईटी से हो। अगर तुम चाहते तो लाखों की नौकरी कर सकते थे, अपना बिजनेस भी खोल सकते थे, पर ये सब छोड़कर तुम इस छोटे से स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को। ऐसा क्यों? I think education empowers you. It doesn't matter whether you want to be an investment banker, a farmer, or an actor. It helps you take better decisions in life. And that is the message we are trying to spread through this film. Take 6, clap. So far we have completed the shoot of the film. And now we are short of 20 lakhs to complete the post-production and finish the film completely. These funds will be used for editing, DI, VFX, sound and music. So please come together and help us bring this film to you. You can fund any amount you want from the options below. You can also get some meaningful rewards for yourself. You can contribute via debit card, credit card, net banking, or you can even ask for cash pickups. Just remember that it's an all or nothing campaign, which means if you don't reach our target of 20 lakhs, you will get your money back and we will not get a single penny. India's economy is largely agricultural and it is very important for our farmers to get education so that they can help themselves make better decisions and come out of the cycle of poverty and debt. I invite you all to be part of this eye-opening film and let's spread this message all across India.